Good morning, everyone. Good morning, sir. Good Yeah, morning, sir. Good morning, sir. very good morning. I'm audible, good, Yes, sir. This Yes, sir. is quite clear. Yes. clear. Yeah. Okay, so we'll wait for 2 more minutes. I guess people are joining. Then we'll start. Okay, everyone can see the presentation slide. Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes, sir, we can see. Yes, sir. so we'll start. I guess the last lecture we have completed till the mission statement. Okay, we have done this part, the characteristics and the features of a mission statement. Okay, now this is one of the example we can say about the Mercedes-Benz we have took, and again we have taken the example of Disney as well as the Google. Okay, now we'll move forward with the mission statement. Now, vision is also similar as a mission statement, but when you talk about a vision statement, the vision statement is always for a long-term goal. It is not basically describes a short-term goal. The company really has good amount of visions. Every company has a vision statement, and now it is say the book says that for 20 to 25 years now, the definition of vision has changed. The vision basically is for long term, 50 years, 70 years, 80 years, sometimes 100 years. So vision is a long term goal the company always see. They work hard, they make their targets, they make sure they earn profit, okay, for the good amount of visions. Now, if you take an example of a Dhirubhai Ambani, okay, Ratan Tata, Jamshedji Tata, okay, they have seen the vision to make Tata Group a giant group. Okay, Reliance जब start हुआ था तो एक छोटी सी company थी. Now they are a huge organization. So this is said to be in a vision of an organizations. Okay, they have acquiring lots of private firms, public firms. Okay, a huge amount of workforce they have huge amount of turnover. So this is said to be the vision of an organization. So it is not something like a short-term goal, a short-term journey of an organization. It's a long-term goal. Okay, that is said to be in a vision. So the term vision is used to describe a clear sense of future. It relates to idea and belief regarding the firm's purpose and values. A vision refers to a long-term plan. Now it is said to be a 20-25 years, but actually it has changed now and it basically moved forward for 50 to 60, 70 years. Okay, the business today is confined to a domestic market, but it intends to diversify into the overseas market in next 5 years. This is the definition given by Miller and Des. A vision is the category of intention that are broad, all-inclusive, and forward-thinking. And again, one of the management guru, Philip Kotler, has given the definition.
A vision is a description of something, an organization, a corporate culture, a business, a technology, and activity in the future. Okay. So we'll move forward to features and the characteristics of a vision. Now, vision is something like you need to share with each and every person of an organization. अगर आप कोई भी company में चले जाओ, the most importantly, the mission statement and the vision statements are written in a bold and in a bigger size at the entrance of an organization. आप कोई भी company में चले जाओ, कोई भी मतलब it should be a mid-sized organization, a small size organization, okay, a larger organization, manufacturing unit, जहीं पे कहीं पे भी चले जाओ, you can see the vision statement of an organization at the entrance of a company. Now, why they write the vision and the mission statement at the entrance? Every day when employee basically comes to the organization, he should read that mission statement and the vision statement, so he should get motivated and work towards it. This is the entire purpose. So they should always know कि हमारे कंपनी का पर्पस क्या है, हमारे कंपनी का गोल क्या है, हमको कहाँ तक जाना है, हमने क्या सोच के रखा है और हमको कहाँ तक जाना है. That needs to be understand by each and every employee of an organization. That's why every company makes sure that they write the vision and a mission statement in bold terms at the entrance of an organization. जब एंट्रेंस के जगह पे अगर आपका मिशन एंड विजन स्टेटमेंट होता है, every day when you leave the organizations, when you come the organization in the morning, you can read it. That's why it is important. So first it needs to be shared across the entire organization. ये ऐसा चीज है कि आप इसको आइसोलेशन पे नहीं कर सकते. इट इज वन थिंग लाइक वन मैन ड्रीम कैन बी अचीव्ड विद सपोर्ट एंड कोऑपरेशन विद द अदर एम्प्लॉयज. अगर धीरू भाई अंबानी ने या रतन टाटा ने कोई ड्रीम देखा है, या बेसिकली हैव सीन दीस visionary people, they have seen the vision of Tata Group or Reliance Group, okay, it cannot be achieved in an isolation. The person single-handedly cannot achieve the things. He needs the support of all the employees. That's why it needs to be shared across organization. सारे लोगों के साथ आपको आपका vision share करना ही पड़ेगा. That's more important because the company they need to give the answer to their own कि कंपनी क्या है, कंपनी कैसी है, हमारी कंपनी कहाँ पे होगी, हमारी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी, ये कंपनी कहाँ पे लोकेट होगी, उसका प्राइसिंग कैसे होगा, okay, how you gonna deliver the product and services to the customers. This are things that needs to be find out by the companies. So this basically the vision statement can easily give you the answers. Second, it should be an convincing other. The convincing basically you can say the most importantly, it is a two-way communication. You need to convince the managers and subordinates of an organization to achieve the vision statement of an organization, because the managers and the subordinates are those peoples who gonna really work hard for you, और उनको कन्विंस करना ही इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज योर विजन. इफ यू टॉक अबाउट लाइक सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का सबसे फोकस होता है टू गिव अ satisfactory services to their customer, a quality services to their customers. Now this vision that needs to be informed, to be tell to the managers, the subordinators and the superiors, so they can understand it in a proper way. So these are the people who basically can run the business in a proper way. Whenever you required the environmental changes happens, that environmental changes can be changed, okay. Internal environment can be easily changed, but when you talk about like external environment, it is bit difficult to understand, it is bit difficult to control, it is beyond the control. So whenever you find that there's a certain changes in a environment, तो आपका वर्किंग जो पैटर्न है या गोल अचीवमेंट का जो पैटर्न है, दैट नीड्स टू बी चेंज अकॉर्डिंगली. Then you have redefine the vision. See, business always operates in an uncontrollable premises, okay. There are various factors, जैसा मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि external factors है, internal factors है. So internal factors में you have employees, customers, suppliers, stakeholders, shareholders,
Okay, these are the peoples can be easily controlled. But when you talk about like external factors that said to be in your uh, the external economical factor, political factor, technological factor, government policies, these are the things basically are beyond the control of organization. Now technology, if you take an example of a technology is changing rapidly. आप हर दिन देख लो, हर दिन कोई ना कोई नया नया टेक्नोलॉजी आ ही रहा है बेसिकली. दैट वुड बी अ स्मॉल चेंजेस बट दे आर कमिंग सो फास्ट कि you need to cope up with that. So business needs to be adopt themselves, the business needs to be adapt. They should be understand whatever changes is happening into the market, that all things need to be implemented immediately. अभी अगर आप सबके पास एंड्रॉइड फोन तो अवेलेबल है. Okay, now this Android phone has n numbers of applications available with them, which makes your work more easy. Take an example of Khata book. Okay, Khata book has all the functions of your bookkeeping. जो normal छोटे मोटे business organizations है, जिनको bookkeeping रखना है, जिनको accounts के statement रखने हैं, कितना पैसा कहाँ से आना है, कितना पैसा कहाँ पे देना है, ओके, कितना हमको मार्केट में पैसा रोलिंग करना है, वो सारा चीज आप एक ही ऐप में स्टोर कर सकते हो. सो दिस इज हाउ द technology is getting adapted, it is getting advanced. So people and the organizations need to understand ki what are the things, okay, is happening into the market, and considering that changes we need to redefine our vision. So say most importantly, vision statement cannot be changed. ओके, एक बहुत ही रेयर केस में आप उसको चेंज कर, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो. बट अगर आप बोलोगे कि मुझे पूरा विजन स्टेटमेंट चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपका माइंड क्लियर चाहिए. ऐसा नहीं कि मार्केट चेंज हो गया तो आपने आपका विजन स्टेटमेंट उस हिसाब से चेंज कर दिया. इट इज नॉट लाइक दैट. You need to make sure that you can change, you can make the changes. Okay, small changes can be done, but आप उसको बड़ा changes नहीं कर सकते because it is not acceptable. So redefining the changes can be always happen. Okay, so that, so you can always make some innovations, okay, or improvements in in your existing products. Okay, so you can implement into the market successfully. लेकिन आप उसको टोटली चेंज करने की बात करोगे तो वो नहीं होगा. सेकेंडली, यू नीड टू अडॉप्ट the new technological functions which always come into the market rather than working with the outdated. अगर आप लोग outdated के साथ ही रहोगे तो basically you will always face a problem. Example, you can take Nokia. Nokia did not adapted themselves as per the market, as per the customer preferences. Okay, and they have they are basically was rigid with their product and services, and today you can see they are really out of the market. So this is the live examples. You can see what is, why it is important to change the organization as per the technological part. Okay, then you have a class apart. Now when you talk about a class apart, it always said that ki people or the men really has a vision. See, having an eyesight मतलब आप देख तो सकते हो, लेकिन वो ख्वाब देखना कि I want to be at this place in next 10 years, 15 years, 5 years, that is said to be in your vision. See, all when you have an eyesight, it is just a vision. And a visionary, there's a two different part. When you really has a visionary, you see you are focused to achieve something in a life. And Jamsetji Tata, Dhirubhai Ambani are really are the visions. They has a visionary. They have seen. I want to be make a Tata Group at a positions where no one can touch him. Dhirubhai Ambani has seen the visionary that I want to make my Reliance Foundation at such place, a Reliance organization such place that no one can touch me. That's called a class apart. So n numbers of entrepreneurs you can see in a market who have really has seen the vision, and they are really approaching that vision. Okay, they are really working towards that vision, and they will really reach to that vision part. So every company, that would be a manufacturing organization, pharmaceutical organization, IT companies, okay, a retail organization, FMCG, fast moving consumer goods organizations. You can take any example.
those entrepreneurs who are successful today, आज उनका सारा चीज वहां पे मिल चुका है. आप एक हल्दीराम का ही पैकेट का बात ले लो ना. हल्दीराम इज जस्ट दे आर सेलिंग फरसान्स एंड नमकीन्स, स्टिल दे हैव अ बिग टर्नओवर, a big turnover there. Almost they have 8 tons. ओके, दिन में 8,000 किलो का वो लोग नमकीन एंड फरसान बनाते हैं दिन में. 8,000 किलो. It's not a small quantity, and people are really loving it. So this is how they have seen the future. Okay, so class apart is important. Then you have next, that is your organization commitment. See, just having an vision will not really work. अगर आप एक एग्जाम्पल की मैं बात बोलूं आपको कि आई वांट टू स्कोर 90% इन कमिंग सेमेस्टर, मैं 95 लाऊंगा, मैं 96 लाऊंगा, मैं 90% लाऊंगा, ये बोलने से कुछ नहीं होगा. आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा. इट इज नॉट दैट कि आप सेट कि बाबा हाँ मुझे अच्छा सा स्कोर करना है, आई वांट टू गेट फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, और मैं वो लाऊंगा. सिर्फ बोलने से नहीं होगा. You need to work towards it. You need to schedule your daily timetable. You have to revise your chapters regularly. You have to make the practice of your mathematics, your accounts, everything on a regular basis. तब जाके आप उसको स्कोर कर पाओगे. जस्ट बोलने से नहीं होगा. सिमिलरली देयर शुड बी अ कमिटमेंट. कमिटमेंट अगर नहीं होगा तो देर विल बी अ नो यूज ऑफ योर विजन स्टेटमेंट. सिर्फ विजन स्टेटमेंट लिखने से यू कैन नॉट बिकम अ विजनरी. You have to make sure that whatever vision you have seen, you need to work on it. You have to make your product and services in a similar way. You need to do that. You need to increase your productivity. You need to increase your goals. You need to make it challenging. It is not something like कि मैंने सिर्फ लिख दिया और मेरे को अचीवमेंट हो गया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द टॉप मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. इट्स ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक आई नीड टू अचीव दैट. सो विजन इज सक्सेसफुल कब होगा? जब यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ टॉप मैनेजमेंट. So top management are the peoples who plays a very important role when you talk about achieving your vision statements. So it is an organization commitment कि बाबा मैंने ये fix किया है तो I am gonna achieve that. So it is more important. Then you have uphold values. Now values, ethics and values. Anyone can tell about ethics and values क्या होता है? What is ethics? What is values? Anyone can just put some light on it. What do you mean by uphold values? या values क्या होते हैं basically? Values आपके लाइफ में कुछ रहेंगे ना values की नहीं है? आपके लाइफ में कुछ ethics है, values है कुछ? Ethics can be the moral values, Okay. like what to do and what to not. What to do and what to not to do, right? Like they should throw lights on like what should you do when Mm-hmm. like they help us in the decisions. Right. Or see, values in very simple term can always say your behavior. योर अप्रोप्रिएट बिहेवियर. अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक कुछ 10 या 15 हजार मिलने वाला है, बट उसके लिए आपको आपके दोस्त को धोखा देना पड़ेगा. जो आप अपने दोस्त को धोखा नहीं देते हो, दैट इज सेड टू बी इन योर वैल्यूज. इट इज नॉट इन योर ब्लड. ओके, यू हैव दैट वैल्यूज की जमीर, हम जिसको जमीर बोलते हैं हम लोग इन हिंदी, यू कैन से जमीर. ओके, आई एम नॉट गोना बिट्रेट माई फ्रेंड. मैं किसी भी हालत में अपने दोस्त को धोखा नहीं दूंगा. वो 10 हजार हो जाए, 15 हजार हो. दैट इज कॉल योर वैल्यूज. एथिक्स, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. You always know what is right, what is wrong. I am not going to do any wrong with my friends. Similarly, companies also hold some moral values. They have some appropriate behavior towards their employees. Okay,
they want to give all the desirable things what is expecting by the employees in an organization. For example, industrial relations, yeah, you can say a labor welfare, maternity benefit, paternity benefits, the deductions of a provident fund. अगर किसी का 5 साल खत्म हो चुका है and he want to leave the job, so he should get that gratuity amount. So whenever you have you can give canteen facilities into an organization with a lower rate or a cheaper rate with good food quality. You can give bus services, you can give the health insurance. These are the things you can always keep this value. And I'm very sure to tell that ki Tata Groups provide everything to their employees. टाटा ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हो कल को, फॉर एग्जांपल यू बिकम अ ग्रेजुएट पर्सन एंड यू बिकम अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन टाटा ग्रुप, टाटा के कोई भी ग्रुप में चले जाओ, उनका ऑफर लेटर 10 पेज का होता है. अगर आपने किसी का ऑफर लेटर देखा होगा टाटा ग्रुप का, उनका टाटा ग्रुप को ऑफर लेटर ही कम से कम 10 पेज का होता है. एंड इट हैज ऑल द थिंग्स, यू गेट ऑल द बेनिफिट्स व्हाट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय गेट्स. तो अगर आपको टाटा ग्रुप में कहीं काम भी मिल गया ना, तो ज्वाइन कर लेने का, टीसीएस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टाटा स्टील, टाटा ऑटोमोबाइल. सो इट इज अ वेरी गुड कंपनी. ऐसा बहुत रेयर केस में आपको देखने मिलता है. Then you basically have the organization capabilities. See, organization capabilities सबसे important होता है when you talk about a vision. See, you need to understand what is your capabilities. आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने, एग्जाम्पल मारुति ने 5,000 व्हीकल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया या बड़ा सा ऑर्डर ले लिया. Most importantly, first of all, they need to find out, can we fulfill this order, can we fulfill this entire order of 5,000 vehicles in a month. हम 5,000 व्हीकल एक मंथ में बना सकते हैं या नहीं. that needs to be understand, rather than just giving a false commitment to a client. Okay, you need to understand your capabilities. आपकी क्षमता है या नहीं है वो काम करने की. ओके, हम तो बोल देंगे कि बाबा मैं 80% निकालूंगा, 90% निकालूंगा, लेकिन मुझे मेरी क्षमता भी देखनी है. कैन आई डू दैट? यस, आई नीड टू वर्क हार्ड. आई नीड टू वर्क हार्ड. जहां पे मैं 4 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, आई नीड टू वर्क फॉर 8 hours, बट आई कैन डू दैट. Okay, I need to increase my work, I need to increase my strength. Okay, but I have that capability, so I can achieve that. Because whenever you need to achieve your vision, you have to make the strategies in a same form. इट इज मोर इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के विजन्स के पीछे भागोगे, विजन्स को basically achieve करने के लिए you really have to make the strategies, and that effective strategies will help you out to achieve your organization visions. That's more important. So you need to first understand, does your organization has that capabilities to achieve that goals or not. Okay, so these are the features and characteristics of a vision statement. Any doubt in this? किसी को कुछ डाउट है इसके यहाँ पे, या कोई पॉइंट समझ में No, नहीं sir. आया, या कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. इज इजी टू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, कूल. So these are the few examples of the vision statement. Okay, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का ले लो, a computer on every desk and in every home. See, it is so simple to understand कि इनका vision statement कैसा है. Nike का है to bring inspiration and innovation to the every athletes in the world. Okay, take an example of Amazon to be the earth's most customer centric company, where people can find and discover anything they want to buy online. So this is how they have made the vision statement. You can take the example of a Starbucks to establish Starbucks as the most recognized and respected brand in the world. So this is the which the few examples I have made. Okay,
to understand ki how basically vision statements are made. Okay, so we'll move forward with the goals. See, आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ चार ही चीज मिलेंगे, चार पांच चीज. ओके, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, मिशंस एंड विजन स्टेटमेंट, एंड आखिर में प्लान. The first chapter is full of this only, and if you see that it is getting repeated again and again, same thing. Okay, so goals are time bound. अगर गोल्स की बात करोगे तो आप 4 महीना, 6 महीना, अ क्वार्टर, 6 monthly, हाफ ईयरली, ईयरली is basically comes under your goal. So goal is important. Okay, now my goal is to complete my strategic management ka subject in the month of October. That would be my goal. If not possible, with the mid November I should complete my strategic management ka chapter. So this is how I can keep my goal. You can keep your goal that you can complete your studies till the end of November, so you should be ready with your examination. This is your goal. Okay, so आप एक दिन भर में गोल 2 महीने का, 1.5 महीने का, okay, half yearly का, quarterly का, you can always make a goal, so you can achieve that. Goals are desired state of affair which an organization wants to achieve. Example of goal is Maruti Suzuki to provide a low cost, economical and quality automobiles to the car users. So if you take an example of Maruti, Maruti is the only automobile company in India, okay, which gives you affordable low cost vehicle to the middle class. ये कंपनी लोग ने ऐसी बनाई हैं जो मिडिल क्लास लोगों को ही टारगेट करती हैं. दे डू नॉट टारगेट द हायर एंड पीपल्स, दे डू नॉट टारगेट द वेरी लोअर पीपल्स. इनका सबसे टारगेट है कि मिडिल क्लास पीपल्स. तो अगर रोड पे आप देखोगे, रोड पे आउट ऑफ 10 vehicles you can see 7 vehicles of Maruti Suzuki, a very affordable range, 8 lakhs, 9 lakhs. अभी तो धीरे धीरे प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, बट when you talk about like earlier stage, उनका प्राइस इतना नॉमिनल था, 4 lakhs, 5 lakhs में you can get good vehicle जो 20-20 साल तक चली आ. If you really have maintained that vehicle 20 years, that vehicle has given the support. So Maruti Suzuki is one of the organizations who really give you good quality, low cost vehicle, okay, especially for the middle class. Now goals are prepared for short term and long term. Goals are established to guide the efforts of a company and of its each component. Goals are quantified objective that provides a unit of measurement from which the chief executive can confirm that his strategy has been carried out. Now we'll see the various features slash characteristics of a goal. First, you have accuracy. The most important part is it should be accurate. गोल आप जो भी डिफाइन करोगे, जो भी आपका गोल होगा, वो एक्यूरेट होना चाहिए. इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन. आपके गोल्स में किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इफ यू टॉक अबाउट लाइक आई वांट टू अचीव दिस गोल, नाउ व्हाट, it should be of percentage या it should be of quantity. Okay, कंपनीज में दो ही चीज चलता है. I want to increase my sales by 15% as compared to last year, or I need to increase my quantity of my production with 200 laptops, 200 computers, 200 bikes, 1000 bikes, 5000 bikes, or 10,000 bikes. So your goal should be very specific. Your goal should be very clear. It should be accurate. ऐसा आपको confusion नहीं होना चाहिए कि भाई 10%. Now 10% क्या? किसका 10%? Last year you have basically made a profit of around 1000 crores. तो 1000 crores का 15% मुझे increase करके चाहिए current quarter में. So you need to calculate कि बाबा 1000% का 15% कितना होता है और वो amount क्या आएगा. So you should be very accurate and you should basically understand कि बाबा कितना. It should be in quantity as well as it should be in a percentage. Second, you have acceptability. See, goals
is more important to be accepted by the employees. एक्सेप्टेबिलिटी एम्प्लॉयज ने करना चाहिए. अगर उन्होंने आपका गोल्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ मेकिंग अ गोल्स in the organization. The most important part that whatever goals you're gonna make, that needs to be first accepted by the employees, because उनका ही involvement ज्यादा होगा, उनका ही आपको cooperation लगेगा. These are the people who gonna cooperate and basically getting involved in your entire achievement of a goal. So acceptability होना चाहिए कि वहाँ हम ये कर सकते हैं, कि हमसे होगा. ऐसा नहीं कि आपने अपने मन के हिसाब से बोल दिया कि 1 महीने में 1 लाख व्हीकल बनाना है तो काम करो. दैट इज नॉट पॉसिबल. nowadays 1 लाख ऑटोमोबाइल बनाना इट नॉट पॉसिबल. So the goal should be specific. It should be not so easy, but again not so most complicated as well. It should be acceptable by the employees. अगर वो लोगों ने accept नहीं किया तो it is bit difficult for the company to achieve that goals. Then third, you have evaluation. Now evaluation is more important. जैसे आप लोग का लेक्चर्स के बाद में इंटरनल टेस्ट होता है, आप लोग का बेसिकली इंटरनल टेस्ट के बाद एग्जाम्स होता है, तो आप लोग वो एग्जाम्स क्यों देते हैं? एग्जाम्स देने का पर्पस ये होता है कि हाउ मच यू हैव लर्न द सब्जेक्ट, हाउ मच डिड यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स, आर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर और नॉट. दैट्स व्हाई इवैल्यूएशन इज इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली गोल्स को भी इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है. Okay, a regular feedback is much more important. Now why regular feedback is important? To find out the pinpoint reasons, okay, why the goals did not got attended. हमने goals achieve किया तो good, very good. अगर हमने goals achieve नहीं किया तो what is the reason that we did not achieve that goal? What happened, where we went wrong? Okay, our resources was not good. Okay, मेरे एम्प्लॉयज को समझ में नहीं आया, उनको ट्रेनिंग का जरूरत था, या क्या हुआ जो जो हमने फिक्स किया था वो क्यों नहीं हम अचीव कर पाए. So these are the things that needs to be understood by the organization, and regular feedback, a regular evaluation is important. Whenever you have a regular evaluation, you can easily can keep a trace. You can always keep a trace on the achievement of your goals. Okay. Then you have a next point called constraint. Now constraint का मतलब होता है कि how much resources are available with you. See, making whenever you define a goal in an organization, the most important part is that goals अचीव करने के लिए आपके पास सारे resources available है या नहीं है. Now, what are the resources? Anyone can tell what are the various resources of an organization? Various resources of a company. कोई बोल सकता है कंपनी के वेरियस रिसोर्सेस क्या होते हैं? सर मैन पावर. राइट, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स. कैपिटल, दैट्स कॉल्ड योर फाइनेंस. Raw materials, raw materials, machines, and machines, the infrastructure, technology. Right, good, very very good. और land. क्या? Land. Plan, you should have a plan. Okay, strategies, you should have a strategies as well. Okay, you should have the natural resources as well. जो आपको natural resources लगना है वो भी आपके पास होने चाहिए. आपका brand name होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए. You should have good amount of infrastructure, machineries. Okay, employees, you should have a market, everything you should have. अगर आपका resources constraint होगा तो it is bit difficult for the organizations to achieve the goals. So you should make sure that you have a proper resources. Okay, availabilities of a resources is more achievement. Then you have result oriented. Now what is result oriented? The goals basically should be made in a result oriented manner.
Okay, whatever business policies basically are made, okay, administrative measures basically have taken, whatever a company make the rules, regulations, okay, plans, strategies, policy, it should all be a result oriented. See, goals बनाना आसान है, बट उसका आउटपुट भी आना चाहिए, आउटकम भी होना चाहिए. अगर आपको आउटकम नहीं आ रहा है उसका, तो it is not so easy to get the results. So if you really want to have a good amount of results, the more important you should have the good policy should be formed by the organizations. And then you have flexibility. See, flexibility is something like you cannot be rigid on your goals. See, goals आप थोड़ा चेंज मॉडिफाई थोड़ा सा कर सकते हो. सी हल्का सा मॉडिफिकेशन कंपनी हमेशा कर सकती है इन देयर ओन पावर. जहां पे हमने बोल दिया कि विल गो एंड मेक श्योर दैट विल अचीव 20% ऑफ अ प्रॉफिट this year, this quarter, this half yearly quarter. So you can change a little bit. You can say that कि ठीक है 20% नहीं हो रहा है ना, we can go for 18%. If for example अभी लॉकडाउन से पहले किसी कंपनी ने एक टारगेट रखा होगा, या जनवरी के महीने में किसी ने गोल्स रखा होगा कि this first 6 months will do the business of 15%. But unfortunately the external environment has made the entire strategies and goal, okay, inappropriately. Okay, this have ruined the entire plan. So you can change, you can modify a little bit, and you can make sure that कि जहाँ 15% की बात हो रही है, वहाँ पे 10% हम लोग अचीव करेंगे, 12% हम लोग अचीव करेंगे. So this can be easily done by the organizations. Most importantly, so flexibility hona chahiye, so you can achieve your goal, you can make a small adjustment. The small adjustment can be always helpful to achieve your goal. So jahan pe 15% hum achieve nahi kar pa rahe, haan theek hai, make sure that you can achieve the 10% of your goals. Okay, then you have understandable. See, this is the one of the most important point, understandable. The goals which you make, okay, in an organization, that needs to be understand by each and every employee. अगर लोगों को ही आपका गोल समझ में नहीं आएगा तो वो काम कैसे करेंगे. उनको, अगर आपको आपका टारगेट क्या है वो समझ में आया तो ही वैसा काम कर पाएंगे. एम्प्लॉयज को या बेसिकली आपके ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर को अगर आप लोग के गोल समझ में नहीं आए, तो इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू अचीव योर गोल्स. So make sure that you achieve the goals, okay, that should be make in a very simple terminology. जो भी आप goals बनाओगे वो एकदम simple terminology में होना चाहिए, and it can be easily it should be easily understand by the employees. वो समझना बहुत important है. अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो it is not useful. Okay, then you have challenging. See, goal also it should be understandable, but it is again it should not be very simple. अगर वेरी सिंपल हो जाएंगे तो लोग लेथार्जी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे. सो बोलेंगे अरे ये तो आराम से कितना 2% ही तो हमको करना है ना, तो 2% तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, नो इशू. 5% हमको हमारा टारगेट अचीव करना है ना, 5% तो आराम से हो जाएगा. सो वी शुड नॉट मेक मोर कॉम्प्लिकेटेड, but it should not again have, it should not be very simple. So it should make sure that the company form the goals in such a way that it should be challenging. It should not be more complicated कि भाई ये कैसे अचीव होगा. कैसे अचीव होने से बेहतर है कि हाँ वी कैन अचीव 9%, 10%. हाँ, बट अगर आप कॉम्प्लिकेट की बात करोगे तो 18% ऑफ अ प्रॉफिट, 20% ऑफ अ प्रॉफिट, इट इज बिट डिफिकल्ट. So challenging is more important. You can make the goal statements challenging, but it should not be complicated कि हम लोग उसको achieve ही नहीं कर पाए. But again at the same time it should not be so easy कि उसको आराम से लोग हल्के में लेना चाहिए. So that is said to be challenging priority. Okay. Next you have priorities. So goals basically it should not be uniform important. It should always have some priorities. So 2 से 3 goals आप बनाते हो. सी मिशन स्टेटमेंट आपके बड़ा सा पैराग्राफ होता है, विजन स्टेटमेंट भी आपका पैराग्राफ जैसा होता है. But if you talk about like objectives and goals, so it can be of one line.
we want to achieve the goals of 20% in this coming quarter, okay, this year, this half yearly. So this is a one line statement. So there are almost 4 to 5 goals you can always keep in line, okay, and this 4 to 5 goals needs to be give priority कि कौन सा बेसिकली हमारा जो गोल होगा वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। अगर वो नहीं होगा प्रायोरिटी आपके पास में तो यू कैन नॉट बेसिकली अचीव योर गोल। सी, प्रायोरिटी इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। आपके दिन भर के काम में भी यू हैव टू गिव सम प्रायोरिटी टू योर वर्क्स कि कौन सा काम हमको सबसे पहले करना चाहिए और कौन सा काम हमको आखिरी में करना चाहिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वर्क एंड यू नीड टू टेक द स्टेप एज पर योर प्रायोरिटीज कि कौन सा काम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हमको उस पर चार्ज लेना चाहिए। Then you have balance. See, balance is something like there should be a proper balance between a top management and a manager, okay. Now why you have to keep a balance between a top management and the managers or subordinators or supervisors or the coordinators into an organizations, so you can avoid the conflict. सी, गोल्स को लेके ना यू कैन चेक द वीडियोस ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे वीडियो चेक कर लो, इतने सारे झगड़े होते हैं स्पेशली विद द मैनेजर्स, ओके, डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, टारगेट अचीव क्यों नहीं हुआ, ओके, व्हाट इज द रीजन, आपने काम नहीं किया, आपने एफर्ट्स नहीं डाला, ओके। टॉप मैनेजमेंट ब्लेम्स द मिड लेवल ब्लेम्स द लोअर लेवल। तो ये सारा चीज होते रहता है। But if there's a proper understanding between the top management and the middle level managers, तो वो सारा सारा चीज बैलेंस्ड हो जाता है। So you can make sure that कि whatever goals are made in a proper way should be in a very proper way, so you can avoid the conflict. आप झगड़ा उसमें कम कर सकते हो। अगर आपका झगड़ा कम हो गया तो you can surely work forward towards the achievement of your goals. Okay, have you understand all the points? किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया फ्रॉम एक्यूरेसी टू बैलेंस? इजी टू अंडरस्टैंड? कोई पॉइंट समझ में नहीं आया किसी को? No, sir, it is easy to understand. ओके, इफ यू हैव सीन, आई सेंड द पीपीटी। हमारा वेनेसडे को वेनेसडे ना कल हाँ कल या वेनेसडे को बेसिकली हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो आई शेयर द पीपीटी विथ यू ऑल गाइस, यू कैन सी कि इज ऑल गेटिंग रिपीटेड। Then we'll move forward for the importance of a goal setting. Now why goal setting is important? First you have a profit growth. सी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी कंपनी अगर फॉर्म होती है तो वो कंपनी फॉर्म करने का पर्पस होता है टू मेक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सी, वेन एवर यू हैव गुड अमाउंट ऑफ you have a goal, you have seen the making of that goal is to achieve good amount of profit into the organization, okay. This goal basically has made to increase the profit for a long run, okay. It is something like they want to establish from that point of view कि हमको ये profit चाहिए और that needs to be increased. Now when you talk about like profit growth, it should be of a 12%, okay. Now whatever you have invested, okay, the whatever company has invested in something, you should get a return on investment, that's called ROI. जो भी, not only companies, even you invest some money in any business, okay, in share market or wherever you want to invest, you make sure that you get a return on investment, okay. That is the major thing, most importantly. So if you tell something like I want to have good amount of profit, मुझे at least 12% का एक return on investment चाहिए, that is more important. With a growing profit of 5%, 6%, 10%, depend upon company policy to policy. Okay, so profit growth is one of the most important role, most important importance or a goal for setting the goals. सेकेंड यू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमने हर बार उसको स्टडी किया है कि हमारा प्रोडक्ट बेहतर कैसा है कॉम्पिटिटर से, ओके।
My product is also of around same range, okay, 19,000, 20,000. Take an example of a soap, Lux का soap ले लो, Lifebuoy ले लो, या hand wash ले लो. तो if you talk about like hand wash, Dettol का hand wash and Lifebuoy का hand wash, around 150 rupees, 90 rupees, जो उनका price होगा, that price basically आगे पीछे होता है, but what different they are giving, a good packaging, good basically essence, okay, जो भी आपका हैंड वॉश सोप होगा उसका एसेंस अच्छा होगा, ओके, इट बेसिकली गिव्स यू गुड व्हाट यू से, आपको थोड़ा अच्छा एसेंस आने का यू फील गुड कि वहाँ इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी उसका नहीं है, कि स्ट्रॉन्ग एसेंस उसका नहीं है कि आपको तकलीफ होगा. एंड अगेन प्राइस इज कंपैरेटिवली गुड विद द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. So you can give the n amount of features, characteristics in your product with a similar range. Okay, so आप उसको उसके बाद for example you have you are selling AC. Okay, so if you talk about like refrigerators or AC, so you're giving the air conditions as a best price, okay, as compared to the market, plus we are basically giving a good amount of customer services, okay, हमारा quality भी अच्छा है, okay, हमारे company का product का efficiency भी अच्छा है. So these are the things basically can always keep in mind when you talk about like competitive advantage. Okay, there are very few companies in a market who give you the product and services at a very reasonable rate. Okay, plus they give you customer services, after sale services आपको अच्छी मिलती है. The quality of the product is very good. Okay, there's no issues in the product, so this due to which the people go and purchase. एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि 10 में 7 गाड़ी 7 व्हीकल आपके मारुति की हैं. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ their product and services. Okay, a very affordable price, a good quality of the product and services, after sales services, low maintenance. तो एक मिडिल क्लास लोगों के लिए या किसी भी बंदे के लिए ये सारा चीज इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे गाड़ी का हर बार मेंटेनेंस नहीं कराना है. अगर कोई भी लोकल गैरेज के पास लेके जाऊं तो वो उसका काम करेगा. ओके, प्रोडक्ट लॉन्ग लाइफ चलना चाहिए, इट शुड बी एन अफोर्डेबल रेंज. तो ये सारा फैक्टर्स अगर आपने कंसिडर किया तो यू कैन ऑलवेज रिमेन इन मार्केट. मारुति इज देयर इन अ मार्केट फ्रॉम लास्ट 30-40 ईयर्स. इंडिया में तो लास्ट 30-40-50 ईयर्स से लोग यहाँ पे हैं. तो दे रियली have kept the hold on a market. Okay, they are really doing well in a market. Then you have improved performance. See, whenever you have a long-term performance, you basically this goals always helps in increase your performance into the organization. Okay, most importantly, customer satisfaction, employee satisfaction, innovation, productivity, product quality, everything basically has some specific targets. You always have. Okay, so you can improve the performance of an organization. मुझे customer satisfaction भी चाहिए. At the same time, I want to satisfy my employees. See, whenever one of the entrepreneur, I guess Elon Musk ने बोला था या किसी और ने बोला था, आई गेस वर्जिन ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि if you really want to remain in the market, you want to sell good products and services in the market, first of all make sure that you have a एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. जब आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको आपके सारे कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे. अगर आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, बिकॉज दिस इज द एम्प्लॉयज आर हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओनर हर जगह जाके काम नहीं करता है. ओनर बेसिकली द ओनर विल गिव यू द डायरेक्शन, but at the same time the employees who basically represent the organizations towards the customer कि बाबा ये कंपनी कैसी है, क्या क्या बेनिफिट्स देती है, हमारा ख्याल रखती है कि नहीं रखती है, हमको क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो सारा चीज का ध्यान रखती है. Okay, this is basically comes under the hold of an owner. So owner has to make sure that they satisfy their employees. They make sure that your employees are happy, then your customers are happy. अगर आपके एम्प्लॉयज हैप्पी नहीं हैं तो आपके कस्टमर भी हैप्पी नहीं होंगे. The most important, so it helps to improve the performance of an employee. Okay, you can make sure you can give some liberty, you can give some autonomy to the employees so they can basically do some creativity with the product and services. अगर आपने आपके एम्प्लॉयज को अच्छा खासा बेनिफिट्स दिया, उसको खुश रखा,
same time you can increase the productivity of an organization. See, जितना आपका productivity बढ़ेगा उतना ही एक प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको कम लगेगा. जितना प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको कम लगेगा उतना ही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जाता है. So when you set a goal, you make sure that the performance of an organization also increases. Okay. Then you have comprehensive assistant. That's called comprehensive support. Okay. Comprehensive. सर Yeah. सर मैं ग्रुप से अपने आप बार बार लीव हो जा रहा हूँ सर. क्या? सर मैं ग्रुप से ये लेक्चर से अपने आप लीव हो जा रहा हूँ सर, जबकि मैंने कोई भी बटन प्रेसेस नहीं किया था सर, फिर भी ऑटोमेटिकली इट हैपेंस. What's your name? सर अनुराग सोनकर. Okay. सर कुछ रीज़न सर मुझे मोबाइल से सर एक आवाज़ आया था, तो क्या बोलते कि यू आर लिविंग बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द कॉल. Lots of people कितना 23 people तो है खाली. सर पता नहीं, बट सर ये मेरे को 2-3 बार मतलब ऐसा आ चुका है. मैं पिछला कई लेक्चर्स बैठ नहीं पाया इसकी वजह से सर, बार बार अपने आप लीव हो जा रहा था. अच्छा. हाँ सर. तो मैंने बताया था, सीआर को भी बताया था ये बात. मेरे को तो अब मालूम पड़ रही, मेरे को तो पता भी नहीं सर, नहीं. मैं बता दिया था एक बार सीआर को. ठीक है, डोंट वरी, देखेंगे उसका बाद में. सर मैं अभी बार तो बार हो ना. हाँ सर अभी हूँ, लेकिन अगर लीव हो गया तो दोबारा ज्वाइन कर लेना सर, मुझे एडमिट कर लेना. एक बार एडमिट होने के बाद बार बार एडमिट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली आ सकते हो अंदर. मतलब हाँ सर, मैं मतलब वो आप अलाउ कर देना मुझे. अरे एक बार मैंने मॉर्निंग में आपको एडमिट कर लिया ना, तो उसके हाँ. बाद अगर आप बाहर भी जाते हो तो आप डायरेक्टली अंदर आ सकते हो. अगर आप पहली बार अंदर आना चाहते हो तो मेरा परमिशन लगता है. एक बार अच्छा, मैंने ओके, परमिट कर लिया 8:15 को, तो अगर आप गलती से बाहर भी जाते हो विद ऑल टेक्निकल इश्यूज तो आप डायरेक्टली क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं. सो देयर इज नो वरी अबाउट दैट. ओके. सो कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस का मतलब होता है टू बेसिकली कंसिडरिंग ऑल द पीपल्स, ऑल द फैक्टर्स. सी दिस इज समथिंग लाइक यू कैन नॉट थिंग्स यू कैन नॉट अचीव. फॉर एग्जांपल ये नेहार तो पहली बार आ रही ना अभी, जिसका पहला एंट्री है ये टाइम को, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. 1 घंटे के बाद आप ज्वाइन कर रहे हो. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ज्वाइनिंग द लेक्चर देन? ओके. सो comprehensive assistance is something like decisions and increase of a life of business. The overall admission improves, leading the higher efficiency. Decentralizations in decision making gets strong support as employees are familiar with their goals. See, comprehensive assistance basically matlab hota hai you should get a support from all sides. Okay, all the employees, suppliers, customers, आपको सारे जगह से you can you get the support, you can form the decisions, you can increase the productivity of an organizations. Okay, sometimes you can give decisions making to the employees also. So decentralization, see decentralization का मतलब होता है you can allow the employees or managers to take the decisions at their own level. Okay, I'm telling you again and again that key, if you taking decisions at your own level, so it has your own risk. It really has your own risk. Okay, अगर आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया तो गुड, अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो you have to take the responsibility of the same. Okay, the most important part is that कि you make sure that you really taking a decisions, तो वो decision सही होना चाहिए. Okay, then you have a right direction. So whenever you setting a goal for an organizations, it takes you to the right direction. ओके, इट मेक श्योर दैट कि आपका काम अच्छे से हो जाए. वॉट एवर रिसोर्सेज यू रिक्वायर टू कंप्लीट दैट वर्क, दैट इज अरेंज्ड. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपके जो टारगेट्स है वो सेट होने चाहिए. उसके बाद you can move forward in such place, in a way you will get the achievements. That's called right directions. Okay, you should reduce the wastages of all the type. You should reduce everything wastages which happen. See, जितना आपके wastages reduce होंगे उतने ही basically आपका profit margin बढ़ेगा.
जितने आपके वेस्टेजेस इंक्रीज होंगे उतने बेसिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होते जाएगा. So goal setting always takes you to the right directions to achieve your goals. Then you have management competency. See, management competency का मतलब होता है management efficiency, skills and abilities and knowledge the management have to achieve the goals of an organization. The goal, the company, the organization should always has the competency. आपके कंपनी के मैनेजमेंट के पास वो स्किल्स, वो एबिलिटीज होने चाहिए to achieve the goals of an organization. They should have the efficiency. They should work towards the efficiency of an organization to cut down the unwanted cost. जितने भी आपके unwanted cost कम होते हैं तो you can easily achieve your goals. Then you have essential inputs. Essential inputs का मतलब होता है availability of your resources. हमने previous slide में ही पढ़ा था. Availability of your all the resources is said to be in your essential inputs. You should have human resource, you should have finance, you should have a sales and marketing team, you should have infrastructure, you should have machineries, you have plant and machineries, plant machineries, land and building. आपके पास रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये सारे चीज का इनपुट आपके पास होना चाहिए. इफ यू हैव द अवेलेबिलिटीज ऑफ द ऑल द रिसोर्सेज you can surely achieve your goals in a proper way. अगर आपके पास input ही नहीं होगा तो you will not get the output, because proper, अगर proper quality का input या raw material आपके पास होगा तो good quality output आपको मिलेगा. So essential inputs में यही आता है कि if you really want to increase your production, a good quality production, आपके पास अच्छे खासे quality के employees होने चाहिए. That would be a blue collar worker, a white collar worker. You should have the latest machineries with you, high-tech AI technological machines. You should have money, you should have finance, capital for that. Okay, everything you should have with you. Okay, and then you have a control element. See, controlling the employees is important. Okay, जो आपके employees हैं उनको control करना बहुत ज़रूरी है. अगर you are not controlling your employees in a proper way, you will really face the issues. You need to find out where is the issue. हमने ये गोल सेट किया था, फॉर एग्जाम्पल हमने 15% ग्रोथ का गोल सेट किया था और हमको सिर्फ 10% ही मिला, तो ये 5% कहाँ चला गया, वेयर दैट 5% वेंट. वो डिविएशन जो भी होगा वो डिविएशन को फाइंड आउट करके उसके पे वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Otherwise, it will not help you out to achieve your goals because you're already wasting your money behind setting the goals, working on it. अगर आपको अच्छे से उसका revert back नहीं मिला तो. So more important, you should always understand कि whatever things you have made, you should have a control over it. अगर आपका control वहाँ पे नहीं है तो it is bit difficult for you to complete your goals. Okay, so these are the various importance / role of a goal setting. Any doubt in these points? किसी कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. Easy, clear, clearly understanding Yes, sir. the This things. is easy. Yes. Yes, sir. Okay, so we'll move forward for the objectives. Again, objectives are a broad statement of the values which an organization aims to achieve in a future. Objectives, it is again similar to the goals. Okay, objectives and goals, vision and mission is all similar to each others. So objectives may relate to strategy, profit, market standing, technological leadership, employee development, etc. Objectives are not stable over a long period. It is not for a longer period of time. Objectives are always set for a shorter period of time. They are redefined from time to time as the environmental changes takes place. Objectives act as a driving force to motivate managers to run the business on a profitable line. Okay, then you have a well-defined objective removes confusion and vagueness in the mind of employees and provide coordinated efforts. So whenever you really has a clear
understanding of your objectives is removes the confusion from the mind of employees. Okay, now this is the thing जो हमने पहले भी पढ़ा है. Just go through it. अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो let me know. I'll clear that point. हमने गोल्स पढ़ा, हमने उसके पहले विजन पढ़ा. ये विजन एंड गोल्स में ये सारा पॉइंट्स हमने बेसिकली कवर किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, टेल मी, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट. ये सारे Sir. पॉइंट्स हमने क्लियर किए. हाँ बोलिए. Sir, hierarchy of objectives would mean that even the objectives themselves are set at different difficulty levels. नो, As such. हायरार्कीज ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब प्रायोरिटी कि Oh, which okay, okay, objective okay. should Got give it, the got it. first priority. Yeah. Okay, sir. हाँ, कि हमको 4 से 5 ऑब्जेक्टिव सेट किया हमने, तो उसमें से हमको कौन सा ऑब्जेक्टिव्स को पहले प्रायोरिटी देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी. सिर्फ उन्होंने टर्मिनोलॉजी चेंज किया है बट मीनिंग सेम ही, हायरार्कीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. प्लूरल स्लैश मल्टीपल इन कैरेक्टर का मतलब होता है कि मोर देन वन ऑब्जेक्टिव्स, 2 ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स, 4 ऑब्जेक्टिव्स, 5 ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर एंड इजी अंडरस्टैंडेबल मतलब the objective should be understand by the employees in a very clear terms. Concrete and specific का मतलब होता है should be very accurate. क्वांटिटी के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से, मुझे 25% इंक्रीज करना है मेरा बिजनेस, तो उस हिसाब से. It should not be simple. It should not be more complicated. It should be a challenging. The objective should be challenging. It should be a time frame. तो एक time frame के लिए होना चाहिए. Okay. It for 3 months, 6 months, 1 month, 15 days, half yearly, yearly, जो भी आपका time frame होगा. A concrete manner. It should be evaluated. It should be measurable. The आपका objectives measurable होना चाहिए, evaluated होना चाहिए. म्यूचुअल सपोर्ट मतलब आपको टॉप लेवल से एक म्यूचुअल सपोर्ट होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ म्यूचुअल सपोर्ट बिटवीन द employees, between managers, subordinators, coordinators, supervisors. That should be mutual supportive. Subject to constraint availability of your resources. जो भी आपके resources है, inputs है, उनकी availability आपके पास होने चाहिए. Hierarchies of objectives, that means the priority which is given to the objective, which objective is more important as compared to the other objectives. Flexibility, the objective should not be rigid in nature, it should be flexible enough, तो जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको चेंज कर पाओगे. ओके, क्लियर? Yes, sir. It is Yes, easy sir. to understand. Yes, sir. Yes, sir. Okay, today the voice was clear, it was properly audible. It was absolutely perfect, sir. Today was really good audio. ओके, थैंक यू वेरी मच. तो हमने अभी इतना कंप्लीट किया है, सो टुमारो विल स्टार्ट विद द प्लान. ओके, आज के लिए इतना काफी है. ओके, तो विल स्टॉप हियर. Okay, sir. All right, Okay. sir. सो सार्थक, HR lecture will start by 10 o'clock sharp. Okay, sir. I'll send a message on the group. Yeah, I'll send the link 5 minutes before. Okay, उसके बाद फिर मैं आपको भेजता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लीजिए फिर. Done. All हाँ? right, sir. Okay, Yes. thank you very much everyone. Thank you. Thank you, sir.